Let us discuss a topic of 12th biology, mammary gland. Mammary glands are completely absent in case of male, but in present are present in case of female. Let us discuss about this. This is the human breast structure. Mammary gland is manipulated or controlled by the pituitary gland. The first portion is known as mammary lobe. Mammary lobe is the area in which mammary alveolus are present. Alveolus is a singular word, plural is known as alveoli. Mammary alveoli are present inside the mammary lobe. Mammary alveoli are the place from where the milk is released, or the mother milk is released. Those milk which are released from mammary alveoli comes through the mammary duct to the ampulla. Ampulla is the place where the milk are stored temporarily. Then the upper part is known as nipple. The black area or the black tissue which are present on breast or side of nipple are known as areolar tissue. Areolar tissue. That's why this area of mammary gland, mother breast is called as areola due to formation by the areolar tissue. तो एरियोला टिश्यू द्वारा ए एरिया गुडा तयारी कर जो ब्लैक कलर टिश्यू कहली ताकू एरियोला बोली कहंती. दिस इज द निपल रे प्रेजेंट अछि लैक्टिफेरस डक्ट. लैक्टिफेरस डक्ट देकी मदर मिल्क जोटा आंकुला स्टोर थिला लैक्टिफेरस डक्ट देकी बाहर पसंद. जेहेतु ए मिल्क रे लैक्टोजेन नामक गोटे जिंस स्टोर हे अछि, दैट्स व्हाई दिस डक्ट आर कॉल्ड एज लैक्टिफेरस डक्ट. एही लैक्टिफेरस डक्ट गुडा को निपल देकी बाहर को ओपन थांती by the sucking pressure or the oxytocin present in baby's saliva which help for the release of this mother's milk. in mother milk release हो पाई एई जिंस गुडा के. अच्छा आउटर मुझे रोची प्रथमे गोटे बड़ लार्ज एरिया थिला दैट इज नोन एज मामारी लोब. मामारी लोब भितरे मामारी अल्वियोलस और मामारी अल्वियोली भली रीजन गुडा थिला. आ भितरु रिलीज हुए मिल्क by the mammary gland. then से मिल्क गुडा को मामारी डक्ट देकी एम्पुला रे से पहुंचंती. एम्पुला रे माने टेम्पररी स्टोर हुंती. तापरे ए मिल्क गुडा को लैक्टिफेरस डक्ट देकी निपल देकी बाहर रिलीज हो. निपल पोर्शन रे आउटसाइड जो टिश्यू गुडा को अछंती से टिश्यू गुडा को नाम अछि एरियोलार टिश्यू. एवं ब्लैकिश कलर बा ब्राउनिश कलर हे परंती. ए टिश्यू गुडा को एरियोलार टिश्यू हेति बाजो दिस प्लेस इज कॉल्ड एज एरियोला. This breast is completely absent. I mean, mammary gland is completely absent in case of male, but present in case of female. Since they are born up to their puberty, these mammary glands are underdeveloped. After puberty, they are developed. But बेले बेले देखा जाए जे किछि मेल मानकर मध्य ब्रेस्ट डेवलपमेंट हुए. ए डिजीज को कहंती गायनेकोमास्टिया. If the breast is developed in case of male, then that disease is called as gynecomastia. ए रोग gynecomastia बोली कहंती. मेल रो केबे mammary gland formation हुएनी, केवल breast साइज इंक्रीज हे जाय. आउट इम्पोर्टेंट ब्रेस्ट कैंसर जो जिनसडा सेटा मेल रे हुए नाही, केवल फीमेल मानन को हुए. बट किछि ट्यूमर लाइक जिनस मेल रो निपल रे मध्ये इंक्रीज होबार मस टिश्यू गुडा को मांस गुडा को जमा होबार देखा दे मिल्क. This is all about the mammary gland and the female breast. अच्छा, the first milk of mammary gland by mother जो first milk release हुए ताकि कहते colostrum, and it is slightly yellowish in color and it has sufficient amount of protein, carbohydrate and enough rich. I mean mother milk रे सब कुछ nutrient भरपूर है and it is very necessary for a newborn baby. बेबी रो ग्रोथ पाई प्रोटीन दरकार, एनर्जी पाई कार्बोहाइड्रेट दरकार, ऑल आर प्रेजेंट इन मदर्स मिल्क. दिस इज ऑल अबाउट द mammary gland and female breast. And myself Rudraj Mohanty. I am from Gaurav Science College and NIT Zone Institute that provides education to all the students or plus 2 pass out students about the NEET, and as well as we also provide classes to all the plus 2 students only in science branch. Thank you.